Good morning, students. The topic periodic classification of elements. In the given periodic classifications of elements, we show that in the Dobenoid triads, Newland's law of octaves, that in the element there the classification of the state of the matter. In the given state of the matter is that the solid state, liquid state and gaseous state. What types of the elements? That the metal, non-metal and metallites. That can be the element types of the elements. State of the matter, that can be principle applied for this Newland's models. And what are the smallest particles of the matter? That is called the atoms. Smallest particles of the smallest particles is that is called atom. In the given Dobenoid triads, in the German scientists prove that the atomic masses, elements are related to their atomic masses. एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस पे यहाँ पे रिलेटेड है, दैट कैन बी मेड द ग्रुप ऑफ दिस थ्री एलिमेंट ईच ऑफ दिस एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. एंड डेबुलर ट्रेड्स में कहा जाता है कि जब भी आप वहां पे पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स रिलेटेड सिचुएटेड करते हो तो उस टाइम में आप एटॉमिक मास भी इस एलिमेंट का देखना जरूरी है. उसी में डोबेनॉइड ट्राइड्स ने यहाँ पे कहा गया है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंटिनियम है जिसे एसआर कहा जाता है, बेरियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बराबर है. So that can be the atomic mass of these middle elements are approximate of the atomic masses of their two elements. That is called the Dobenoid triads. Newland's law of octaves क्या कहा जाता है? Newland's arrange किए the elements in increasing order of these atomic masses. ये Dobenoid triads कहता है atomic mass. Atomic only mass is that, but is that increasing atomic masses. Increasing atomic mass arrange करता है Newland's law of octave. That can be the lithium. And what is the limitations of this? That are the limitations of the Newland's octave. Newland's could arrange the 56 elements. Newland ने कितने एलिमेंट्स अरेंज किए हैं? 56 एलिमेंट्स अरेंज किए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. इंक्रीजिंग ऑर्डर तो उसका गुणधर्म ही है, प्रिंसिपल ही है, नो प्रॉब्लम इज दैट, बट दैट कैन बी द अरेंज द 56 एलिमेंट. दिस एलिमेंट अरेंज द स्टार्ट विद द हाईएस्ट एलिमेंट अप टू द लोएस्ट एलिमेंट. हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? दैट द हाइड्रोजन. एंड अप विद द थोरियम. Lowest is that thorium. That can be the arrangements of the periodic law in the Newland's law of octave. What is the Mendeleev periodic table? लास्ट में पूछा गया है थर्ड में that the Mendeleev periodic table. In the first Dobenoid triads atomic mass पे कंट्रोल था. Newland's law of octave increasing atomic masses from the highest to lower, hydrogen to helium. Mendeleev's periodic table कैसे था? That the Mendeleev periodic table, the most of the important step of the classification of the element. And this is the most important of the points of view of the classification of the element. In the fundamental property of the element, that can be the atomic masses. And that can be arranged the 63 elements at the time of increasing order. यहाँ पे भी increasing order पे किया गया है. There are overall the 53 elements arranged in this Mendeleev periodic table. And that can be the periodic table, the element physical chemical property, that can be the function. इसमें Mendeleev में physical और chemical property बताया गया है. Dobenoid triads में atomic mass is that. Newland's law of octave में increasing the atomic masses from the highest to lower. And the Mendeleev periodic table जो है that can be the increasing of this given functions of their atomic masses. In the given periodic table, the functions of the atomic masses. So in such a way that by the next video.